Can you hear me online students now? ठीक है, आपने देखा फिर पे जाके, have you studied the map? हाँ, कितने लोगों ने किया? ठीक है, so you can have a glance at this also. What you can understand now from this? Is it better like yesterday? We had a map which was without description, and it's having all the description available. So can you see all of this? बताइए. This is your again Saudi, UAE, Oman, Yemen, Iraq. Remember that here, Kuwait. यहाँ पे नहीं, कौन कह रहा है इराक होगा यहाँ पे? ठीक है. Now this is your Sinai Peninsula. This is your Suez Canal, Red Sea, Arabian Sea, and Mediterranean Sea. ठीक है. Fair enough. ठीक है. Alright. दूसरा मैप देखिए. समझ में नहीं आ रहा क्यों? आ रहे हैं ना? Persian, Arabian, Red, Iraq, Kuwait, Qatar, UAE. This is Saudi. पूरा इसके ऊपर जॉर्डन, जॉर्डन के जस्ट बाद में इजराइल, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी. आई थिंक इसमें तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए. भूमिका समझ में आ रहा है ना? पूरा याद हो जाएगा मैप आपको एक ही बारी में. दैट इज द पर्पस. बी अ फुल, कुछ भी करके फुल पहनो, क्योंकि दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. आप भी बी अ फुल. आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई नो ना दिल्ली में क्या होता है इस टाइम पे. प्लीज. हाँ हाँ ठीक है, इतना ठीक है. मस्किटो बाइट्स एक्सेट्रा टू मच दीस डेज, बहुत ज्यादा, इसलिए बोल. नाउ this is a corridor trajectory that I wanted to show. Yesterday, I mean day before yesterday, we had a discussion of India, Middle East, EU corridor. Remember, we had a discussion where this IMEC was discussed in G20, which happened in India since September 2023. ठीक है? Have you seen the whole atmosphere at that point of time in Delhi? ठीक है? हाँ, it was clean. तो वापस से same. हाँ, the same चीजें. So now, what kind of route they are taking? So IMEC route is like this. So we'll go from Mumbai, starting from Mumbai, and then it is also starting from Kandla. Kandla is also a very busy port, one of the most busiest port that we have. This is in Gujarat and Mumbai, the port. And then from here we will move through our ships and we'll go to this part.
This is a port of UAE, which is Fujairah. Next, it will go to Gayfort. It is also a port of, no, it is of, it is between basically Qatar and your Saudi. And then it is your Araja, which is also a port. No, wait, this is a port actually. This is not. Please remove this. This one. Okay. This is your Dammam. Then you have Ras El Khar. Okay. This is a Haifa, which is in Jordan, and then it moves here and it will go to European countries. Okay, this is the connectivity that we were talking in IMAC. Can you see how they will go? यहाँ से यहाँ तक आपका सी रूट है, फिर यहाँ पे आपका ports, and then they will transport these goods here in within the Saudi. Saudi has a great connectivity. The moment the ship offloads, it just get unloaded from the ships. They are having a good transit system, and there you have the buses, you have good infrastructure, and they take you to the inside of the Saudi Arabia. Then after that, it will go to this port. यहाँ पे आगे आपका sea route है, Mediterranean Sea, and then after that you have a good connectivity. There is no problem of connectivity after that point. This point, ठीक है? The missing point was we were not having a good connectivity like this. और ये कहाँ से जा रहा है? First of all, you have to tell me. See, we have a good transport system here. ये आपका Suez Canal है. Can you see this? यहाँ पे we already have a system, but we do not have a system where it can be connected like this in the upper part. So we have to make this. This is your IMAC, which is India, Middle East, EU corridor. Specially लिखा है Middle East. क्यों? Because we do not have this part. We were not having this part. ठीक है? We have India, Middle East corridor that we wanted to have. ठीक है? Existing line, under construction line, ये जो आपके डॉटेड्स में दिख रहे हैं, that means under construction line. Then missing line, I don't know what is the term in infrastructure. Okay, these are the ports which are marked in blue. ये जो आपके blue दिख रहे हैं, ये name of ports है. ठीक है? Then you have sea link. ये जो dotted से dark blue से color से है, ये sea link है. ठीक है? Got it? Easily understandable. ठीक है. यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से दिखेगा. Again, they have shown a trajectory. Done. This is also said that they are making this. It's also against what? The BRI project of China. Because China doesn't want it definitely, and that's why if you see in this region, especially, there is a lot of what is happening. War is happening. This is also proposed that because they do not want this corridor to be successful, China will never let the part of the Middle East to be in peace. The moment this place will come in peace, this corridor will operate, and the China's mega project, which is its ambitious project, we call it as Belt and Road Initiative, will come in. Lot of nobody would want to be a part of it. Why somebody would get into a trap and be a part of it? So they would never want this area to be successful. I mean, at least not in peace. There's a lot of turmoil in this place. If you talk about Israel, that is also not in. You have already seen the Gaza Strip, how they have been affected, because this is a Gaza and which is just adjacent to this part. Then you have Israel, which is also not having it's not in a good state. Iran, you know already, and China is already funding Iran in a lot of its programs, right? So, and everybody knows that. So they would never want this area to be in peace. So these would be some of the challenges that you can write. Now coming on to the next, again, I would like to focus on the ports. This can come in your prelims as well. This question can be asked in the prelims, and also for your conceptual understanding, you need to know how many ports are
to be connected in this program. Main ports, although there could be more than this, but main ports, this is one, Mumbai, this is Jabal Ali of UAE, this is the capital. Now you have Haifa. Do you understand that Haifa was blocked because of this war issue, and they have to open another port for their transportship of the goods. And after that, you have this Greece. Greece, may you have Paris. These are some of the ports. Then you have the El Wafut of UAE again, and Arada we have discussed in the previous slide of Saudi Arabia. Just have a look at it. ऊपर लिखा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, पूरा है ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप. इसके बाद यू हैव अ गुड कनेक्टिविटी, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिविटी. हाँ हाँ, यू कैन. ऑल्दो आई शेयर द पीपीटी विद ऑल ऑफ यू. हाँ, देख लोगे ना, समझ लोगे ना. अब तो पीपीटी का रेफरेंस क्या करना है, बस पीपीटी को देखना है, समझना है, याद आता जाएगा पॉइंट जो मैंने क्लास में बताया. ठीक है, राइट. देखो दिवाली पे सब चलेगा इसलिए स्कैटर्ड है. हाँ, गए क्या सब अभी? अभी बन गो अभी दिस होल प्लेस. यहाँ पे भी ध्रुव आप नहीं जा रहे? अच्छा, आप लोग कल जा रहे हो, तो कल क्लास नहीं करोगे? गुड गुड, वेरी गुड. कितने लोग आ रहे हैं कल? सब लोग आ रहे हैं ना जो यहाँ पे? वैसे एंजॉय करना दिवाली पे अपना पूरा, नॉट सेइंग दैट, बट कभी बीच बीच में टाइम मिले तो एक बार वो नोट्स देख लेना. ठीक है, अगर टाइम मिले तो. ये देखिए, ये जो आपका रेड लाइन है ना, दिस वन, दिस इज योर रेल रूट. ये वाला जो आपका रेलवेज ऐसे कनेक्टेड रहेगा, और ये वाला डॉटेड वाला, दिस इज योर सी. आइडियली ये भी सी होना चाहिए था. सेम चीज जी, ये आपका बेटर वर्जन, इससे बेटर है. I think nothing to be explained in this. Just look at on the board, everyone. Better है, पूरा better, मतलब सब कुछ इसमें अच्छे से प्रॉपर. हाँ, ये जो इसमें गल्फ ऑफ अकाबा भी दिख रहा है, जो आप उस दिन बोल रहे थे. देखो ये है स्विस, गल्फ ऑफ स्विस दिस साइड. ये वाला जो है ना, ये गल्फ ऑफ स्विस है, और ये वाला गल्फ ऑफ अकाबा, दिस वन. इधर वाला स्विस, इधर वाला अकाबा, और इसको डिटेल में भी ब्रॉड करके दिखाया है. ये आपका यहीं पर है. ये आपका गल्फ ऑफ एडन, यहीं पर है.
स्टेट ऑफ हॉर्मोस ऊपर है, बताया था ना ये रहा। सेम, डन। ठीक है, मैप पूरा याद हो गया आपको? देन राइट डाउन। कहाँ तक लिखा था प्रीवियसली? सेमेंटेंसेस मतलब कंप्लीट कर लिया था ना हमने। ठीक है, अब लिखिए। हाँ, राइट डाउन। रीजंस फॉर इंस्टेबिलिटी इन मिडल ईस्ट। रीजंस फॉर instability, reasons for instability in Middle East। आपको लगता है मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी जितनी है वैसे ही रहेगा या इट विल इम्प्रूव? हाउ मेनी एक्चुअली बिलीव दैट इट विल इम्प्रूव? It will not. Okay, how many people think that it will improve? And give me the how many sections believe that it will improve? कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता? क्यों? रीजंस बताइए एक एक। इलीगल मतलब? अच्छा, लीगल। ओके, कैन यू नेम सम कंट्रीज व्हिच हैव लीगलाइज्ड? गुड। हाँ, इराक, ईरान में भी, ईरान में भी। ठीक है, इजराइल और आप बताइए भूमिका, डू यू थिंक? वेरी गुड, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज, बट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान इजराइल, यू कैन नॉट से। हाँ हाँ, but because of that is the internal problems that they're having, Palestine etc. वो who else can tell me? और क्या क्या इश्यूज हैं आप बताइए। दिवाली के पास एनर्जेटिक होके आना, स्टार्ट स्पीकिंग इन द क्लास। ठीक है, सो एवरीवन इज स्पीकिंग, आप क्यों नहीं बोलते हो? हाँ, आप दोनों, दोनों कोई नहीं बोलता। बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास ना। अब टाइम इन्वेस्ट किया है, पूरे दिन आए हो तो यू जस्ट बी हियर 2-3 आवर्स को आपको, यू हैव टू गिव अ गुड अटेंशन टू द डिटेल्स ऑफ द क्लास, है ना? यू डोंट लाइक टॉकिंग मच, यू वांट टू स्टे रिजर्व। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बताइए, और बताइए, आप बताओ गौतम, आप बताओ दिव्या, और सोचो। न्यूज तो पढ़ते होंगे, कोई न्यूज देखता है? व्हाट्सएप पे देखती हूँ, कहीं पे भी, मतलब यूट्यूब एक्सेट्रा, सोशल मीडिया, आई मीन टू से ट्विटर, इसे हेडलाइंस ही दिख जाती हैं, कोई नहीं देखता। क्या देखती हो फिर? व्हाट इज योर रूटीन, ऑनेस्टली टेल मी। उसके बाद का ज्योग्राफी, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखो, मैंने बोला था ना। क्यों इंटरेस्टिंग नहीं लगते? तो उस पे देखो ना, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते। ह्यूमनली कंडीशन कहाँ पे पुअर है? Syria. But I don't you think that the tagline that we have given, that these people are not well developed, but if you see majorly Saudi Arabia, UAE, they are giving a lot of hopes to the people that this area will actually improve. Why do you think Saudi Arabia is trying to make good relation with the people, good relations? They are trying to maintain the peace and stability in the region. They are also trying to mediate some of the things. रीजन क्या है इसका? बहुत बड़ा रीजन है that tourism is their next motto. They have to drive, they have to withdraw their revenue from that. And knowing the fact that tourism is an important attraction for the people, it is not possible for them, it is inevitable. अगर वो वहां पे peace stability नहीं होगी, who would want to go there? You make mahals in any part of the country, but if the peace and stability is not there, nobody would like to go there. So that is the main attraction for the Saudi Arabia, that इनके लिए इनएविटेबल है पीस, सेफ्टी के लिए। यूएई, कतर, ये पूरा एरिया,
और अगर ये स्टेबिलिटी नहीं देंगे, देन व्हाट विल पीपल विल डू? दे विल नॉट कम टू दीस एरियाज, knowing the fact, अभी आप कितने भी लोगों से सुनिए, everyone says that Dubai is the most safest place, most safest place. You talk to any Bollywood actor, you talk to any politician, you talk to anyone, I've seen so many times people saying Dubai is the most safest place. क्यों बोल रहे हैं? Because they want to make that area a kind of an aspirational area for a lot of people, and they are becoming, they are going on that trajectory. People want to visit again and again for the peace, for the safety, for viewing the magnificent buildings and the kind of architecture they are providing, that is next gen. और अगर वो आपको मिल रहा है, that means अगर stability की cost में मिल रहा है तो कोई नहीं जाएगा. Who would like to risk their life and go for the recreation? फिर तो अलग ही recreation हो जाएगा, right? So you have to also think like that. So मेरा perspective ये है that you said कि नहीं कभी stability नहीं आएगी, पर मेरा perspective ये है because of some countries, because they oil कितने time तक रहेगा, it's not going to, तो future prospects में definitely हम ये answer लिख सकते हैं that they're going to be a stability during the fact that they are making tourism as their main revenue source. If you see कितने सारे, and see who's who are visiting their places. If you talk about big footballers, if you talk about big cricket players, you talk about big politicians, you talk about big celebrities, Hollywood being a Hollywood actor, being a Bollywood actor, they all are visiting that place. And if they are visiting, that means it has to be safe. ठीक है? Now write down, first लिखिए reasons of instability. Write down. Reasons लिखिए पहले. हाँ. हाँ. टेररिस्ट कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं है इन लोगों के लिए. टेररिस्ट बाय डिफॉल्ट मतलब आ गया है यहाँ पे. तभी तो इजराइल इज ट्राइंग टू किल ऑल द हमस. उनका पूरा उन्होंने बेस हटा दिया. बेस दे हैव डिसमेंटल. क्यों? बिकॉज दे वांट अ पीस. दे डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट. उनके लिए भी करेंगे. They are no different from them. These are non-state actors, and if non-state actors will retaliate, don't you think people who, what they will do? They will try to dismantle their bases, and they have done that, and they are in the process. ये क्या चल रहा है 1 साल से 2 साल से? They are doing that. हाँ, but वो कुछ extreme level पे चला गया. I don't support that point. That people were in hunger, etc. Gaza Strip में जो हुआ, it was not acceptable, and that too after 1945 जब हमने decide कर लिया था कि we would not let this to happen again. ये पुराना चीज ही हुआ है, जैसे नागासाकी में हुआ है और जो आपका हिरोशिमा में हुआ है, और ये सब जो हुआ है जेनोसाइड जो ज्यूज का हुआ है, ये सब अलाउड नहीं था. Do you know Kyoto was also on the list of that bombing? हाँ, अगर टारगेट नहीं था, 3 टारगेट्स थे, 2 टारगेट्स थे, पहला क्योटो एंड देन हिरोशिमा. What happened? The Secretary of War, he was the one who had to decide the list of the places where he had to drop the bomb. But the point is, the Secretary of War has gone for the honeymoon in Kyoto. So he was so attached to that place, so he removed the Kyoto place and then he replaced it with Nagasaki. ये स्टोरी थी. हाँ, this was the story. So there was a story. See, if you have a story attached to something, then you would not, you have a good memories with that thing, then you would definitely try to come. You will definitely try to do what? हाँ, relate. और आप चीज को हार्म नहीं पहुंचाना चाहोगे, तो उन्होंने वही किया. So no, he prepared the list. The Kyoto, it was given to Secretary of War, Kyoto, Nagasaki, and Hiroshima. Then he said, please remove Kyoto from this place because I have seen the culture of this place. I have seen the beauty of this place. So I would not like to keep this Kyoto in the bombing list. अब इसको हटाओ. I've gone for honeymoon here. तो आप यहाँ पे हटा दो और बाकी 2 को रखो. So this was the whole story.
तो इस तरह से वो प्रोटेक्ट हो गया. एंड देयर आर वेज दैट पीपल रिलेट टू डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है. हिस्ट्री बहुत, अगर आईआर में पढ़ोगे या वैसे पढ़ोगे, बट देखो वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप मिला के आईआर पढ़ोगे तो इतना आपको समझ आएगा, देन देयर इज नो अदर सब्जेक्ट दैट यू विल लाइक. कोई भी सब्जेक्ट आपको मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा. दिस इज सच अ डायनेमिक, सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. हाँ, और इसका रेलेवेंस हमेशा रहेगा. आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तब भी रहेगा. आप अगर शेयर्स में इफ यू डू समथिंग तो वो भी रहेगा. हर चीजें, बिकॉज पीपल रीड व्हाट मार्केट्स. हाँ, जो भी पीपल हुआ वेरी वेरी रीडिंग गुड, वी आर वेरी गुड विद मार्केट्स, दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये वॉर हो रहा है तो ये चीज होगा, इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और यहाँ पे मुझे लगा देना चाहिए क्योंकि इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, इस वाली कंपनी का ज्यादा बूम हो जाएगा तो मुझे यहाँ लगा दे. दैट इज हाउ पीपल रीड द मार्केट्स. IR is going to be relevant for every industry. And if you have, I told you, for the financial also, bureaucrats के लिए भी और people who are reading that उनके लिए तो है ही. ठीक है. लिखिए. Middle East has been a difficult geography where it is. Middle East has been a difficult geography where it is difficult to produce and implement. अच्छा ठीक है ठीक है. Middle East has been a difficult geography where it is difficult to produce and implement political and social political and social and economic solutions. Solutions. ठीक है. Full stop. Instability appears to be the most stable process. Instability appears to be the most stable process in the Middle East. In the Middle East. Full stop. This is actually the result of appears के बाद to be the most stable process in the Middle East. Full stop. This is actually the result of the historical development. This is actually the result of the historical development process of the Middle East region. Of the Middle East region, comma, traditional social structure, traditional social structure, and foreign interventions. Traditional social structure and foreign interventions. Foreign interventions. Full stop. The main reason, the main reason, the main reason for the unstable structure, the main reason for the unstable structure in the Middle East are fact that it has remained, it has remained under various, it has remained under various
Write down. Write down the main reason for unstable structure. लिखा आपने? Remained under various governments for century. It has remained under various governments. It has remained under various governments for centuries. ठीक है? Write down. Comma, lagging behind in terms of politics, comma, economy, lagging behind in the terms of politics, comma, economy, comma, social life and culture, comma, unemployed young population, unemployed young population, unemployed young population reaching high numbers, comma, lack of adequate democratic, comma, lack of adequate democratic high numbers, comma, lack of adequate democratic representation systems, comma, lack of adequate democratic representation systems, comma, political alternativeness, comma, political alternativeness, political alternativeness, ठीक है? Write down. And alienation to ensure the voicing of demands, alienation to ensure voicing of demands. Write down. The most important of the institutions, the most important of the institution that form the social cultural, that form the social cultural institution that form the social cultural, हाँ यही बोला है मैंने, the important institution that form the social basis of social cultural structure in the Middle East, in the Middle East is family, in the Middle East is family, is in the Middle East is family. Write down. The kinship structure, the kinship structure, the kinship structure in the Middle East is male centered. Do you think patriarchal they have not improved a lot? Patriarchy में मतलब they are more of a patriarchal rather than they just I think if you want to live there, like people have not been given the voices. The moment they are like they shut your mouth and then you can have the luxury, तब तक सही है. The moment they will start raising, you remember there was some event that has to happen. I think this FIFA only, which happened in I think UAE, Qatar में, okay, Qatar it happened. नहीं जो हो चुका था अभी जिसमें दिस अर्जेंटीना वॉन मेसी टीम इस कंफर्म है नहीं नहीं यहाँ पे जब मिडिल ईस्ट में हुआ है
नहीं नहीं, 22 में हुआ है ना, 22 में, बहुत पहले, अभी 22 में हुआ है, अभी रिसेंटली 2 साल पहले। हाँ, उठाई नहीं है ना अभी, मतलब ढंग से, they have not raised the voices. There are some things which are not allowed for the women in Saudi Arabia. Qatar में था ना, so Qatar में what happened, that celebrity has to perform the the event, then they were given the dress code. This is the dress code that you have to follow while performing. And there was a very famous celebrity, I guess it was what is his name, very famous one, Dua Lipa, correct, Dua Lipa. She rejected it. Do you know Dua Lipa? You must be knowing, right? Huh? हाँ, Dua Lipa. She rejected it. हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, correct. So she was the one. She was the one. I am not going to do this at the cost of changing what I do. The one levitating. And that is a song that she, the very famous one. So she was. बाद में देख लेना. Good songs. अच्छी. कहाँ पे? हाँ. कौन सी कंट्री है? देखो देखो. नहीं, मुझे लगा आप दुआ लिपा को देखो. बताती हूँ. अभी तो 28 में होगा, 22 नहीं 26 में होगा ना, कनाडा में. अच्छा, मैक्सिको तो नीचे है अमेरिका के, कनाडा ऊपर है. अच्छा, तीनों में कर रहे हैं. गुड. तो ये कौन जा रहा है देखने? Put it in your bucket list. ठीक है, और लिख कर ना इसे रख लो कि आई एम गोइंग टू गो. लिख रखा है, ठीक है, बताओ मत, शेयर मत करो. हाँ, ठीक है, अपने पास तक रखो और देखो उसको, जिस जो भी आपका मतलब है कि यू हैव टू गो हियर, यू हैव टू वॉच, जिसको होता है कि नहीं टीवी पे नहीं, यू हैव टू गो लाइव एंड गो टू वॉच दिस, and you will get the goosebumps कि नहीं, this is what I used to watch in TV, and I have seen people so freak 4 a.m. का मैच देख रहे हैं सुबह उठ के, वो उनको अच्छा लगता है. ठीक है, it's not, I'm not getting judgmental, I'm just saying this is good thing that you should have one hobby. There was one of this topper of UPSC, Kanish Kataria. He shared his whole routine and he shared something which was very different. कहते मुझे नहीं फर्क कल प्रीलिम्स है या नहीं है. I used to watch, अगर मुझे वो फुटबॉल का मैच या फिर मुझे क्रिकेट देखना है तो देखना है. I'll watch, I'll give my 2 hours and then I'll compensate by reading and studying. But you should know the balance. But do not kill your hobbies. That is what makes you alive. That what keep you happy. And the most fundamental thing of human existence is happiness. अगर आप खुश हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, और आप खुश नहीं है तो आप कितना ही कोशिश कर लें, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो अपने अपने आप देखिए कौन कौन सी चीजें आपको पसंद है, ट्राई टू मेक इट, लिस्ट इट. ठीक है, कर लो अपने में बातें, कर लो कर लो. ओके, ठीक है, सो ट्राई टू डू दैट. अब क्या हुआ, then she said this thing because I was talking about the kind of mindset that these people are having. So there was one this Bollywood actress also went there, and she followed it because she was also coming from the same thing. But Dua Lipa said that I am not going to come here because I am not going to follow this dress code. And there was a lot of buzz around her that she is coming to perform because she is one of the good names in the singing industry. Huh. Yes, and she is, and she writes beautiful songs also. So she said no, I'm not going to come. And there were other celebrities also. I think if I'm not wrong, Rihanna was also one of them. She said no, sorry.
So these were some of the people who said straight away no, and then there are other Bollywood actresses who got a chance because they rejected. ठीक है? Okay. ह्यूमन कंडीशन से ज्यादा ये कंडीशंस उनको प्रॉब्लमेटिक लग रहे थे that how this is the kind of a you're putting a restriction on somebody's performance. You cannot say आप ऐसे perform करो ऐसे why is there such a dress code for anyone? So अभी भी वो mindset से वो लोग चलते हैं and women are not given lot of privileges that the men are experiencing there. कभी आपने देखा है कोई भी आपकी वीडियो वहां से आ रही है जिसमें women are having their showing their lavish lifestyle only when they are next to their spouse? आपने कभी देखा है that independently women is riding a car and she is lavishing, she is I'm talking a whole thing I'm talking about. हाँ, now she can drive but earlier और बहुत सारी चीजें that we have not noticed और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल्स याद दिलाता है कि हाँ यहाँ पे अभी भी माइंडसेट इज नॉट डेवलप्ड, अभी भी आपका और ये डेमोक्रेसी भी फॉलो नहीं करते, दैट इज आल्सो वन, दे हैव दिस मोनार्की right, which is coming from a very they have a good background and then it's like a kinship thing that the son will become and they take over and then his son will take over, that is what, ठीक है, kinship structure you call it, ठीक है, it's male centered, that is what you wrote right. Okay, write down. The mother enjoys great respect in society. The mother enjoys the great respect in the society. Male structured है. Male structure की बात लिखिए. The mother enjoys great respect in society, but is dysfunctional. But is dysfunctional in maintaining the lineage. But it's dysfunctional in maintaining the lineage. Okay, this is the problem with them. Now, right now, the next paragraph, the Middle East has gained an important position today. So Divyanka is saying, ma'am, I listen to Levitating. It's my one of the favorite song. Good, mine also, Divyanka. Okay. ठीक है. Okay. Or well, I'm happy that they are replying on at least something. नहीं मैं इतना नहीं follow. I just follow. नहीं, I don't follow the कि कहाँ जा रहे कहाँ. I just listen to English जो भी अच्छा लगता है. No, I'm so crazy for the songs. What happened if I if I heard something like Smalls में या वैसे restaurant में, then passing by, then I'll just open and go back and put on my Shazam and just put it there to listen that. Shazam is an application. Everybody know ना? पता है आप लोगों को? Dhruv is like, what is going on? It's an application which detects which song it is. If you cannot. In future, if you know, if you want to have it. Okay. All right. Next, write down. Middle East has gained an important position today, comma, especially with its rich energy, especially with its rich energy resources, comma, with its intercontinental trade routes, with its intercontinental trade routes in the historical process. In the historical process. Full stop. It cannot be said that
economies of the region have developed both in industrialization and technology production. Industrialization, again I'm repeating it. It cannot be said that economies of the region have developed both in industrialization and technology production. Next point, there are large differences between countries in terms of total national income between countries. There's large difference between countries in terms of total national income and per capita national income and per capita national income per capita national income in the Middle East. ठीक है, this is also one of the challenge, right? सुनाइए, बताओ, पूछो. Dysfunction मतलब क्या होता है कि something is not functioning in a way that you want to, मतलब it will discollapse. It means that कोई भी चीज चले ना ढंग से, इसको कहते हैं dysfunction हिंदी में, सिंपल. हाल, right. Right on next point, increasing immigration. देखा आपने रिसेंट यूएसए का, व्हाट हैपन इन यूएसए टैरिफ के बाद क्या हो रहा है अब? वापस ही भेजे जा रहे हो. पासपोर्ट, हैंडली पासपोर्ट लिस्ट, हैंडली पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट पीसीएस बाय द वे. बहुत आता है हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स लिस्ट आता है, जिसमें कौन सी टॉप 10 कंट्रीज हैं जो सबसे अच्छा पासपोर्ट, मतलब जितने ज्यादा होल्डर्स हैं पासपोर्ट के एंड दे विलिंग टू गो दैट प्लेस. So US used to always top the list. Like it was among the top 10, but now this time it has dropped to 12 number, equivalent to Malaysia. पहली बार ऐसा हुआ है. Because no an aspiration नहीं अब लोगों में. Why they would go? They would the amount of money that they were charging earlier versus up, it's more than what they were expecting. Thrice. And also the moment they have put a trade tariffs, what happened, जो उनका जो जितनी भी गुड्स है, गुड्स से जो मार्केट है, फॉर एग्जांपल इफ मोर गुड्स विल बी देयर, देन यू विल फाइंड द अल्टरनेटिव. इफ यू समथिंग यू आर गेटिंग इन 100 rupees and if you can get the alternative in 50, you will go for 50. So people, that was balanced. Now that products, which a variety of products are not there, because import not, there is no even the motivation for the people to export the products because they have to give the duties. So that way also what happened, उनका जो मार्केट है उसमें जो प्रोडक्ट्स है उनका जो प्राइसेस है बहुत बढ़ गया. Inflation has gone up, and you would be very much surprised to know that American consumers are 55% वो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं इस पूरे प्रोसेस से. ठीक है, जो जो होना चाहिए था उसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है. सिमिलरली हियर, इसको यहाँ पे रिलेट करना, राइट डाउन, इमिग्रेशन increasing immigration to cities and rapid population growth also increase unemployment, also increase unemployment, also increase unemployment. Next point, full stop. Increasing social and political problems, increasing social and political problems increases the reaction of the people
problems, increases the reaction of the people, reaction of the people to the administration day by day. Therefore, people's inclination, therefore, people's inclination, okay, therefore, people's inclination, therefore, people's inclination towards illegal activities is increasing, comma, weapons, comma, weapons. Illegal activities is increasing, comma, weapons. Drug trafficking, comma, drug trafficking and corruption spread throughout the region. See, if you want to mess a country's population, the only way you can do it through the, अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहते हो कि you don't want this country to progress, तो आप क्या करोगे? You will try to indulge them in the drugs. This is what they have said. And this is what has been tried on India as well. India mein you have two triangles where this drug thing is coming. One is the, what that triangle is known as, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा triangle है वो? One is there and other one is in Thailand. हाँ, थाईलैंड म्यांमार पूरा ट्रायंगल और एक वो ट्रायंगल है इंडिया में. हम ऐसे नहीं बोलते ना, ऐसे नहीं बोल सकते. समझ में आ रहा है? कौन से ट्राई, आई थिंक इट्स गोल्डन ट्रायंगल, टेल यू. यस, गोल्डन ट्रायंगल. गोल्डन ट्रायंगल आपका बनता है, नहीं पता ना कॉन्सेप्ट? आज मैं बताती हूँ. इंडिया का मैप का है ये रहा, ठीक है. अब देख लो, देखो जो गोल्डन ट्रायंगल है रेफर टू सेवरल डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वन इज साउथ ईस्ट एशिया नोन फॉर द ड्रग प्रोडक्शन. दिस इज द वन, ये वाला, इसको आप बोलते हो गोल्डन ट्रायंगल, जो क्योंकि यहाँ से पास होता है आपका, ठीक है. Right, this is what you call it as, and lot of trafficking is happening from this part. This is known as the triangle, the trafficking happening from here. दूसरा triangle है आपका ये west, north western India, this Punjab and this all Jammu Kashmir, this Afghanistan, ये पूरा. What triangle this is known as? I think this is known as, I get confused between the two, golden and other one. Yes, golden crescent. This is known as golden crescent. आ जाता है, ये भी पूछा गया है. ये है आपका गोल्डन ट्रायंगल. अब लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, व्हाट दिस गोल्डन ट्रायंगल रेफर्स टू. ये तो कुछ बहुत अच्छी चीज होगी, वेरी फैसिनेटिंग, ठीक है. दिस इज अ गोल्डन ट्रायंगल. यहाँ से देयर इज अ इजी एक्सेस, बिकॉज एक्सेस बहुत इजी है, एंड देन दे विल पास इट फ्रॉम हियर, एंड दिस इज अ हब दैट दे हैव क्रिएटेड, एंड देन दे विल पास द इलीगल स्टफ फ्रॉम दिस प्लेस. तो यहाँ पे फ्रॉम हियर गोल्डन क्रेसेंट,
So this is the point. If you want to really make any youth population of a country, not like they do want to progress them, that this is the only thing, and that's why you need a lot of philosophers in the country to tell you, because they listen to them, they follow them. Like for example, uh, Premanandji, right? So he is the one who has been talking about this topic and telling people to come on the right path. That's very important. ऐसे लोग philosopher influencers चाहिए आपको to guide the youth. और जितने उन लोग को follow करेंगे, so why do you follow विराट कोहली? अब विराट कोहली ऐसे कुछ करने लगे, you will follow them. So you have to do the right thing so that people who are following them also do the right thing. There is a you have to get you. There's a response. If you're so famous, then you have to do the right thing so that people who are following you automatically do the right things. Okay. Okay. So this is also one of the problem. Next, write down radical anti-system groups. Radical anti-system groups. Anti-system groups are getting stronger in this area. Are getting stronger in this area. There is radicalism in the area, comma, it can be said that absence or weakness of other political movements in the Western sense that will direct the reactions caused by social movements developed in these countries. Write down the political structure of Middle East region is diverse. The political structure of the Middle East region is diverse in the and economic and social structure. In economic and social structure. That's all about the instability. And next we will write the future of the Middle East after this. Before that, you have to do an activity. You have to write an answer in 7 minutes. Okay? कल आ रहे हो ना आप लोग सारे? ठीक है. भूमिका? Why? क्या हो गया कल? हाँ? कल चले जाना. आज रात को. हाँ, don't go रात को. Go in the morning. टॉन्ट में बोला. मैं समझ सकती हूँ. नहीं, मैं समझ सकती हूँ. आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी थी तेरे से? What happened to you?
What happened? Up used to come now with two people used to come now together. Acha, everything is fine. Check. Write down. Discuss the strategic significance. Huh? हाँ हाँ. Discuss the strategic significance and challenges. Discuss the strategic significance and challenges of India Middle East. India Middle East relation. India Middle East relation. Relations. India Middle East relation. ठीक है. स्ट्रक्चर जैसे मैंने समझाया वैसे ही लिखना. ठीक है. सोनू यू राइटिंग बिग पैरा. कंटेंट वाज गुड बट स्ट्रक्चर मेंटेन करना. ठीक है. स्ट्रक्चर यू कैन आल्सो रेफर फ्रॉम दिव्या. दिव्या ने भी अच्छा लिखा था स्ट्रक्चर. श्वेता ने भी. राशि का बस आंसर बड़ा हो रहा है, उसको कम करो. आई रिमेम्बर आप लोगों का. एंड आई चेक ईच वन ऑफ योर ईच वन आंसर. ठीक है. स्टार्ट राइटिंग योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 10:31.
करता है, एटलीस्ट हेडिंग्स लिख मिलना ताकि ना ये पता हो कि स्ट्रक्चरिंग ऐसे ऐसे की, ये पॉइंट्स तो होने चाहिए, चाहे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना। 2 minutes left. Already 1 minute ऊपर हो चुके. Stop writing now. Stop writing. Stop. Tashi, stop. Everyone, stop writing. ठीक है. Intro किसने लिख लिया? आपने intro नहीं लिखा? Intro किसने लिख लिया? सोनू, आपने? ठीक है. Body किसने लिख ली? Body. Conclusion मतलब कोई भी रिजर्विंग नहीं है. मैं आई वाज लुकिंग कि कोई तो कंक्लूजन तक पहुंचे, उसके बाद आई विल कम टू. एक वर्ड कंक्लूजन ही लिखा है बस. हाँ, इंडिया है. अब देखो ये मैंने आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया है, तब आप नहीं लिख पाए हो. हाँ, राशि यहाँ नहीं. एग्जामिनर ऐसे नहीं करेगा. ही विल नॉट बी सो पैम्परिंग यू लाइक आई पैम्पर यू. ठीक है, वो जानता नहीं होगा आपको. छाला अभी आपको 3 घंटे का पेपर लिखना पड़ेगा. इतने क्वेश्चन में कुछ छाला पड़ गया. अच्छा ओके.
अच्छा, मुझे भी लगा। वैसे हो जाता है, योर हैंड विल प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको बहुत हाथ में दर्द होगा। नहीं मैम, नॉट मूव लेकर जाना। 3-3 घंटे जब आंसर लिखना होता है पूरा हाथ जैसे दर्द करने लगता है, इट पेन्स। नहीं अलाउड नहीं, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन तक कोई नहीं पहुंच पाया। क्या कह रहे हो जाएगा, ठीक है, चलिए चेक करती हूँ। शोमी लिखा ही नहीं, आंसर ही नहीं लिखा। अच्छा ओके, तो आपने क्लासेस नहीं ली है? अच्छा आपको था। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना, ठीक है, कंप्लीट इट। दिखाओ। देखो 8 मिनट में आपको लिखने के लिए बोलती हूँ तो आप ये लिख पाते हो, और आप कितने पेज का आंसर लिख रहे थे इतने दिनों से? यू आर राइटिंग 2-3 पेजेस। वो क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा था, इसलिए लग रहा है, इसलिए यू आर राइटिंग मोर, ठीक है। दैट इज वन, समझ आया ना कि व्हाई आई एम सेइंग दैट कि छोटा लिखना है। एक बार ये वाला तरीका देखिए। एक्चुअली ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट ठीक है, थोड़ा बड़ा इसको लिखिए। गुड, गुड, आई स्टिल कंसीडर इट नाइस। दिखाओ, दिखाओ, पहले से बोल दो। गुड, ये तो कंक्लूजन भी पूरा नहीं है, वो बॉडी भी पूरी नहीं है। देखो दिस इज सी, आप कितना अच्छा लिखते हैं उससे मैटर नहीं करता, आप कंप्लीट कहाँ तक कर पाते। देखो इन्होंने पूरा बॉडी एटलीस्ट 2-3 पॉइंट लिखे हैं, तो ये मैटर करेगा। आप बहुत अच्छा, यू राइट वर्ल्ड का बेस्ट आंसर, डजंट मैटर, वी आर नॉट एबल टू गिव द इंप्रेशन टू एग्जामिनर कि आपने 3-4 पॉइंट्स नहीं लिखे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। देखो कैसे लिखा है इन्होंने, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट रिलेशन, देन अंदर की तरफ देखिए कितना क्लैरिटी मिल रहा है। ईरान इज द बिग क्रूड ऑयल, एक एग्जांपल दिया इन्होंने, फिर नीचे एग्जांपल दिया। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर देते, शी हैज गिवन सम स्पेस एंड राइट रिटन, फिर चैलेंजेस, गिवन सम स्पेस, ये क्लैरिटी आई एम एक्सपेक्टिंग। गुड, ठीक है, कंक्लूजन तक आओ, ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देना और फिर कंक्लूजन, बस इतना आंसर, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं पिछली बार से, मैंने बोला था सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है, यू टू राइट इन पैरा। नहीं कर रहे हो ना प्रैक्टिस क्लास में? शो मी ऑफ। हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ लिखा सही है, गुड, इंट्रो अच्छा लिखा है आपने। दिखाओ, जियो स्ट्रैटेजी हॉटस्पॉट इन द, थोड़ा सा राइटिंग इम्प्रूव करो, बाकी स्ट्रक्चर दिव्या से देख। इंट्रो इतना जितना दिव्या ने लिखा है। दिव्या गिव मी योर कॉपी। इतना, इतना ही रिक्वायर्ड है, एक ही पैरा में यूजेस कंप्लीट। सोनू दिखाओ, हैव रिटन। एक वो इनसे लिखना, रेफर टू हर कॉपी, कैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। पॉइंट दिखाओ, प्रूफ, तो इतना खुला खुला मत लिखो, यू विल नॉट गेट। हाँ नहीं वही करना है ना, वो तुमको पता चल जाएगा कि आप ऐसे कर रहे हो जान के, यू डोंट हैव टू डू दिस, डोंट के समझ। हेडिंग्स ही लिखिए ना, ऐसे लिखो जैसे उन्होंने लिखा है, ये ऐसे हेडिंग्स चाहिए मुझे, ठीक है भाई। गोइंग फ्रॉम द पास्ट, ये सेम चीज कंटिन्यू होती है, सिविलाइजेशन तो लिखो ना, सिविलाइजेशनल टाई ऐसे लिखो। देखो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आई एम वांट यू टू राइट लाइक दैट, सिविलाइजेशनल टाइज,
राइट डाउन लाइक दैट या फिर अंडरलाइन करो पूरा, तो पता चलेगा फिर हेडिंग इतना बड़ा बड़ा नहीं, लाइक जस्ट लाइक राइट लाइक दिखाओ। अब इंट्रो ही लिखा है इसमें, तो और लिखो ना इसमें, जैसे दिव्या ने लिखा है उसका देखो। ठीक है, ये अब पॉइंट्स बना के लिखो, रेमिटेंसेस आना चाहिए इकोनॉमिक टाइज के अंदर, फिर इकोनॉमिक टाइज लिखो, फिर एक और टाइज लिखो, ऐसे करके एंड देन राइट द सब पॉइंट। राइटिंग पे काम करना पड़ेगा आंसर्स। मम्मी का आप भी थोड़ा छोटा लिखा करो, इतना बड़े बड़े वर्ड्स जल्दी जल्दी में भी छोटा, इतना बड़ा नहीं। ठीक है, इंट्रो ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक, हाँ ये हेडिंग सही लिखे, पर ट्राई टू राइट स्मॉल, बहुत बड़ा लिखोगे। हाँ हाँ पढ़ लिया मैंने, इतनी जल्दी पढ़ लिया। रिलेशनशिप के बारे में लिखा है मैंने, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी देखा मैंने, रिलेशन। अच्छा कर ही लिया, नॉट गॉट द नोट्स ऑल्सो ना। ठीक है, एक बार दिव्या का एक बार रेफर कर लो 2 मिनट्स में एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। देखो एक बार, आपने देखा, रेफर करो, करो एक बार। देखिए कंटेंट सबके पास सेम रहेगा, किस तरह से आप लिखोगे वो मैटर करता है ना। वो एक सेंस होता है, वो अपने आप आ जाता है कि इतना 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 लिखना है एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। फोमो नहीं करना है, ओ इकोनॉमिक टाइप्स मुझे ये भी लिखना था, ये भी लिखना था, मिस हो गया, पूरा क्वेश्चन मिस हो जाएगा दूसरा। डोंट डू दिस, डोंट गेट अटैच्ड टू अ क्वेश्चन। क्विकली करते हैं, फिर आते हैं फ्यूचर ऑफ मिडिल ईस्ट। ठीक है, आया सबको समझ? अच्छा ये तो रहे थे, व्हाई डिडंट यू टेल मी आल्सो। हाँ ये क्या लिखा, सोशलिज्म, ये सोशलिज्म कैसा है यहाँ पे? नहीं नहीं, नो 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 सोशलिज्म, हाँ ये वाला पॉइंट काट दो, सोशलिज्म नहीं आएगा। इंक्रीजिंग इमिग्रेशन ठीक है, यहाँ से किया आपने? अच्छा ये नहीं आएगा, रीजनल बाउंड्रीज ठीक है, उनका रेफर करा आपने, कैसे लिखा है उन्होंने? इंट्रोडक्शन भी ठीक है, दिखाना क्यों, तो बैकग्राउंड बहुत लोग यहाँ पे बैकग्राउंड से नहीं है। तो यू हैव टू मेक इट अ हैबिट नेक्स्ट टाइम से। ओके ठीक है, अ फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट एंड कुर्डिश पीपल, क्या फ्यूचर रहने वाला है उनके साथ? फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट एंड कुर्डिश पीपल, कुर्डिश, कुर्डिश, KUR, फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट लिखो बस। अरे वो जो टर्किश, टर्किश थे कुर्डिश, टर्किश पीपल नहीं होते, अब पता था ना कुर्डिश है। जब मैं बोल रही थी नहीं लिखना कुर्डिश ना मैम, लिखो अब, write down, although there are concrete, although there are concrete positive development, although there are concrete positive development in the Palestinian hyphen Israel conflict, Palestinian hyphen Israel conflict, Israel conflict, comma, which is a century old problem, which is a century old problem in the Middle East, in the Middle East, comma, Palestine gained observer status, Palestine gained
observer status in United Nations. In United Nations. Observe. Observer status. एक second. Oh, what is this? Just hold on, stop opening actually. Wait. सिक्योरिटी पर्पस से लिख सकते हो, लिखो फ्यूचर में सिक्योरिटी, हेडिंग डालो सिक्योरिटी पर्पस एंड देन राइट डाउन एज इंडिया इज डिपेंडेंट hugely for its natural resources. It's dependent hugely on natural resources. For its natural resources. It is going to be one of the strategic location for both the countries. Next, second point लिखेंगे IMAC, IMEC. मैं IMAC के ऊपर आई गिव यू डिटेल अलग से, जब आपको इंडिया मिडिल ईस्ट का दूंगी IMAC का अलग डॉक्यूमेंट दूंगी, उसको पढ़ना IMAC को डिटेल में, जस्ट गो थ्रू दैट. अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि दिस इज द ट्रांसपोर्ट. अब उसमें आपको क्या मिलेगा, एनर्जी सिक्योरिटी कैसे मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी क्या होगा, डिजिटली कैसे आपका एनहांस करेगा, तो वो सब चीजें आप डिटेल में पढ़ना. बिकॉज ये क्या होता है, सिर्फ सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव यू इन द क्लास, डेप्थ के लिए आई नीड नंबर ऑफ दिस थिंग टाइम. तो मैं जितना कंसाइज करके बता सकती हूँ बताती हूँ, बट इन पीडीएफ यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. राइट नाउ IMAC offers the following opportunities in the future. IMAC offers the following opportunities. IMAC offer the following opportunities in the future. First, enhanced physical and digital connectivity. Enhanced physical and digital connectivity. छोटा सा टैग हाइफन करके लिखेंगे. The corridor emphasizes multimodal transport system. It emphasizes multimodal transport systems, comma, include roads, comma, railways, include roads, comma, railways, comma, maritime routes, and digital infrastructure. Maritime routes and digital infrastructure. To ensure efficient supply chain, to ensure efficient supply chain and efficient supply chain and service linkages. Service linkages. ठीक है. What can be the other parts, other terms in the future, और क्या हम देख सकते हैं look forward policy?
See, just write down point. Just like the Act East policy, India is also going towards West Act policy. Okay, just like India's uh, East policy, sorry, it's also going towards, India is also going towards West Act policy, considering the geopolitic. देखो कैसे वर्ड्स आपको यूज करें, जियोपॉलिटिक and geostrategic, geopolitic and geostrategic importance of the place, of the place. ब्रैकेट में लिखेंगे maximum trade happening through Suez Canal. एग्जाम्पल में आ जाएगा, मतलब जस्ट गिविंग अ रेफरेंस, ठीक है. Now you write down India's growing relation with the countries. ये आप कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो लाइन, ठीक है. India's growing relation with the countries in the Middle East have earned trust and strengthened, have earned, okay, India's growing relation with countries in the Middle East have earned trust and strengthened bilateral relations with many Gulf corporation, with many Gulf Corporation Council countries, council countries. Full stop. India had already taken steps. India had already taken steps to bring South Asia and Eurasia closer to I closer to INSTC. Big letters में लिखेंगे INSTC, which is India's, what is this, the full form of it? INSCTC. IN लिखिए INSTC, ये तो बोला है. Project, North South Corridor वाला project, which speaks of India's ability to build partnership and offer significant lessons. Lessons. Next point लिखेंगे cross border banking and finance. That is also one of the point. UPI has been accepted in your Dubai, Saudi also. They've given the technology to them. This is also kind of relation. We are exchanging the technology. Cross border banking and finance heading डालेंगे. Along with the connectivity and energy projects. Along with the connectivity and energy projects, comma,
an agile supportive ecosystem, an agile supportive ecosystem like banking, comma, financial corridors is needed. एग्जाम्पल में लिखेंगे is needed. एग्जाम्पल में लिखेंगे India's UPI for cross border payment, India's UPI for cross border payment settlements with IMEC countries can be explored. Can be explored. Can be explored. Explode. Explode. R. Explode वाला explode नहीं. Explode. ठीक है. एक point और लिख लो. Education and skills. Do you know that recently that one IIT branch has been opened in the Middle East? हाँ? नहीं. Saudi में ही I think UAE one branch of this has been opened in Middle East. So write on education and skills. R. Explode, bomb explode. वो वाला explode लिखा है आपने? वही लिखा है ना? हाँ वही देखो education and skills. Right up. Transactional technical transaction technical I think this statement will not be right. ऐसे लिखो इसको. India's prowess like prowess like PROWESS मतलब उनका they are good at it. That means India's prowess in higher education PROWESS in higher education and technical education may be complementary to the needs of several nations in the Middle East. That's it. Future के लिए मैंने आपको सारे points लिखवा दिए हैं. Then you can go for the conclusion. ठीक है? Thank you so much, class.